that is second law of Faraday. Second law of Faraday's. What it said that the mass of silver and divided by the mass of copper equal to equivalent mass of silver divided by equivalent mass of copper. So according to the Faraday second law, वो क्या कहता है कि अगर दो या हमारे जो दो से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल सीरीज में ज्वाइन है and same amount of current is passed from the both, then the ratio of the mass of the element will be equal to their equivalent weights. And equivalent weight क्या होता है? That is the atomic mass divided by the number of electrons lose or gain. यहाँ पे जो equivalent weight है वो किसके बराबर होता है? That is equivalent mass equal to atomic mass divided by number of electrons gain or lose by an element, that is the equivalent mass के बराबर हो जाएगा. So here the two law of Faraday will tell us the quantitative aspect of the electrolysis. In electrolysis, what we are seeing that a non-spontaneous reaction will be carried out with the help of the electricity. अब कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो रही है, that will tell us the amount of element deposit at an electrode. And if the electrolytic cell are joined in a series, then we can find out that the mass deposited is equal to the equivalent mass of the element. So here the two laws will tell about the how much mass will deposit and how much current will be used. Now अगर हम कितना चार्ज एक मोल इलेक्ट्रॉन का होगा इसे फाइंड आउट करना चाहें तो फर्स्ट वी हैव टू सी in 1 mole of electron how many electrons are there. So in 1 mole of electrons, 1 mole electrons में कितने electrons होते हैं? In 1 mole of electrons there are 6.022 10 to the power 23 electrons are available. Now 1 electron will have, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? That is 1.6021 into 10 to the power minus 19, and this is the charge on 1 electron. This is the charge on 1 electron. In 1 mole this much electrons are available. So in 1 mole how much charge is there? So let's see that in 1 mole of electrons how much charge is there? 1, and the charge of 1 electron, charge of 1 electron multiply with 1 mole of electron. चार्ज कितना है? That is 1.6021 into 10 to the power minus 19. 1 mole में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? That is 6.022 into 10 to the power 23. So what we are getting after doing this multiplication, we are getting 9
6, 4, 8, 7 coulomb per mole. So this is the charge available on 1 mole of electrons. So this जो हमारा वैल्यू है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ. इसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ एंड विच इज नोन एज फैराडे. इसे हम क्या कहते हैं? फैराडे. सो 1 फैराडे मीन्स, और जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं सो वी विल डू द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. फॉर दैट जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है हम क्या ले लेते हैं? दैट इज 96500 coulomb per mole. So whenever we are talking about 1 mole of electrons means we are talking about 96500 coulomb per mole. Now here I wrote a question. When 0.1 mole of manganese oxide is oxidized, the quantity of electricity required to completely oxidize that manganese oxide to, यहाँ पे क्या है? 2 -2 का चार्ज है और यहाँ पे मीन्स ऑक्सीडाइज हो गया है. तो हाउ मच चार्ज विल बी देयर? आई जस्ट सेड दैट कि इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज या किसी हम 1 मोल, यहाँ पे कितने मोल है? दैट इज 0.1. 1 मोल में क्या है? 1 मोल ऑक्सीडाइज करने के लिए इतना चार्ज लग रहा है. तो पॉइंट 1 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना चार्ज लगेगा? दैट इज 96500 एंड वी विल डू. So how much charge will be required? That is 96500 coulomb. And according to that we are having, which option is correct here? This is the option we are having the we have to choose it because यहाँ से it says कि 0.1 मोल है और 1 मोल में इतने ज़्यादा जो चार्ज होता है. कितना चार्ज चाहिए? तो we will simply multiply with 1 Faraday and answer will be there. फैराडे जो लॉज है या हम जो इलेक्ट्रोलिसिस का जो क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स है, इससे हम 2 चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं. एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. हाउ वी विल डू दैट? एक हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं. व्हाट इज दैट? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 96500. This is the way we can find out the electrochemical equivalent from the 2 laws or quantitative aspect of electrolysis. We are able to find out the electrochemical equivalent, which is a constant, and that can be calculated by equivalent mass of element by 96500. Mean that is the total charge for 1 mole of electron. And इस रिलेशन को अगर देखते हुए हम क्या करेंगे? इन स्टार्टिंग आई टोल्ड यू दैट जो मास डिपॉजिटेड है, दैट मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू द टोटल और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड. तो इन स्टार्टिंग आई टोल्ड यू दैट W इक्वल टू Z इंटू Q. अभी जस्ट आई एक्सप्लेन दैट. सो इसको अगर हम देखें देन व्हाट वी विल गेट? Z इक्वल टू mass by charge, ऐसा हो जाएगा. So we can replace this Z by this value. Then what we will get? W by Q equal to equivalent mass of an element by 96500. So what is the value here? We can simply, यहाँ पे अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो व्हाट वी आर गेटिंग
mass deposited by charge, और चार्ज को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं into current into time, and 96500 equal to equivalent weight और mass. यहाँ पे हम equivalent weight और mass, equivalent weight के साथ हम कर सकते हैं, that is equivalent weight. So this is how we can calculate. एक और हम यहाँ पे relation लिख लेंगे, that is W by current into time into 1 Faraday equal to the equivalent weight of an element. So these are the various quantitative aspect of electrolysis. Electrolysis means where we have to be carried out a reaction with the help of electricity. So how we can calculate how much mass will be deposited, electrochemical equivalent किस तरह से count करना है, what how we can obtain this 1 Faraday or 96500, and how you can find out the equivalent weight of an element if you know the current passed, and if you know the time, and if you know the how much mass is deposited there. So with more numericals I will come in the next video. Till then, you take care and subscribe my video channel for the more videos.